Alrighty, alrighty, alrighty. Hello, 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 everybody. Welcome to the stream. Hello, Shorts, Goel, Patel, Vivek, Ash. वेलकम वेलकम वेलकम। अभी 1 मिनट नहीं हुआ है सेंड से आए हुए मुझे। 1 मिनट नहीं हुआ है मुझे आए हुए। हेलो चौक। व्हाट डू यू थिंक ऑफ नेगेटिव आरआर? मैंने इन्वेंट की थी नेगेटिव आरआर, तो या इट्स अ गुड स्ट्रेटेजी। Alright guys, let's mark some highs and lows, right? Yes, let's go. Hopefully you pass it. I'm also hoping that you pass it, guys. If you have bought recently account, let's pass it together. You trade your own strategy, I trade my own strategy with discipline and everything. Okay. अरे यार वार्निंग क्यों दे रहा है ये नाइट बॉट? गाइस नाइट बॉट थोड़ा थोड़ा वो है। ओके, मेरे बंदे को यार नाइट बॉट को थोड़ा इग्नोर करना गाइस। आज अगर थोड़ा ज़्यादा ही एक्टिव रहे तो मैं उसका फ्रीक्वेंसी कम कर दूंगा। ही नाइस क्रेजी, आई नीड टू डू दैट। रुक जाओ, अभी करता हूँ इसको सीधा। अरे बंदे लिख रहे तो हेलो 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 हेलो। यस, आज मैं एसएल समझाने वाला था। यस, पहले ट्रेडिंग खत्म कर लिया आज। ओके, फिर मैं एसएल समझाता हूँ आप लोगों को। ओके, अब मैं माफ करना गाइस, नया नया स्ट्रीमर हूँ। ओके, बढ़िया। हेलो 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 एवरीबॉडी, हेलो हेलो, व्हाट्सअप व्हाट्सअप व्हाट्सअप। अभी आके देखा मैंने। Sanket, thank you so much for the support. I hope you pass and take payouts and buy 150k accounts next. Why you people stop trading negative RR? Because हमको नहीं करना था negative RR. I guess that can be one reason. I hope that is understandable for you. Can we hold through news in Lucid funded accounts also not evolves? I
think you can, but make sure you double check it. Okay, I'm not making a statement here. I never trade news anyways. So yeah, keep open up. I'm expecting 650, 600 tak jaye, but yeah, but it was doing well, right? Doing way better right now than I was doing in negative RR. So yeah, I created a strat. I created another strategy before even that. Now I'm creating another one. Not creating, like mastering, right? I'm mastering another one right now. So yeah, I can do everything at any time. Okay, Chica bhai bole allowed hai. Okay, take his word for it. This is doing way better, Aman Khan. So I choose whatever makes me more money, not no bias. No bias. I do not have bias. Market is in the short side, so I assume that we're gonna go down. That's all I can say. But bias nahi hai. We have SMT at the lows, as you can see. But other than that, I do not have anything to say right now until market opens. If you want the firm I'm trading with right now, explanation Lucid, and you will get the link. I made it easy for you guys not to go in the description. What's up, Dhruvil bhai? What's up? Welcome to the stream. We got 127 and we are open. I really should get a new voice for that, but yeah, fuck it. We ball. Alright. कितने कॉन्ट्रैक्ट लेते हो भाई? मानने का तो अभी तक एक भी आया नहीं है मेरे पास, तो अगर कोई है, अगर आपको नहीं पसंद है तो बता दियो. Just kidding. If it's 50k account, then one mini probably. If it's 150k accounts, 2 to 3 minis, depending on the SL, right? ऐसे तो like बोल नहीं सकता कि इतना फिक्स होता है. हाँ भाई, पूरा सनी भाई पूरा सोशल मीडिया में घुसा ही रहता था भाई. मैं झूठ ना बोलूँ ना मैं. ओके, सो ऐसा कुछ नहीं है. डिस्ट्रैक्ट देखो, ओवर ट्रेडिंग से डिस्ट्रैक्शन चाहिए तुम्हें थोड़ा सा, वही चीज़ें है. तो कुछ भी करो, बट ओवर ट्रेडिंग मत करो. अगर तुम्हें वो इश्यू है तो यू कैन यूज एनीथिंग टू डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ, बिकॉज यू डोंट हैव डेटा. लूसिड सूरज भाई, लूसिड ऑलवेज.
For right now, not always. Right now, Lucid, and maybe if Tradify comes up with something crazy, then Tradify. So you trade liquidity IFPG model only? Yes. ICT माइक्रोस यूजफुल है। ICT के सारा कॉन्टेंट मुझे यूजफुल ही लगता है मोस्टली। मैं यूज नहीं करता उनका, बट दैट इज डिफरेंट थिंग। वाओ, 50 पॉइंट ऐसा होगा अगर गाइस, तो पोजीशन साइजिंग अच्छे से करना अगर ये इन्वर्ट करता है तो। ओके, पर मुझे चाहिए। ओके, नाइस। भाई बहुत सारी नून आती है। ओके भाई, हाई लोग कितने टाइम पे? 5 मिनट अभी आके तुम्हारे सामने मार किया। मैंने उसका आंसर दे दिया, आपने नोटिस नहीं किया। हाँ, वो बैन कर दिया ना, क्योंकि उनको रिस्क लगता है तो कर दिया बैन, उसमें कुछ नहीं कर सकते। हेलो तोमो, डेनिस भाई। हेलो डेनिस, व्हाट्स अप? ओके, वी डिड रिस्पेक्ट। There is nothing that we can trade off. We do have a 8:30 news, red folder news, George's job opening. So we gotta be okay. वो तो हो गई. Sorry, my bad. Now we do not have news till 10:55. 8:30, is it Chitesh Indian Standard Time? And yes, we do have news. Okay, so we do have news. Alright. गोल्ड क्यों ट्रेड नहीं करते? क्योंकि नहीं करना है मुझे भाई। क्वेश्चन से बहुत ही। ओ माय डेज, इसको कैसे इन्वर्ट ले भाई गाइस? लेना तो पड़ेगा गाइस। नहीं ले सकते, ऐसा नहीं बन सकता। ईएस का वेट कर लेते गाइस, लेट्स जस्ट वेट फॉर ईएस क्लोज। ओके, अगर ईएस क्लोज करता है तो ईएस में ले लेते। एंड क्यू इज जस्ट वाइल्डिंग आउट देयर। ईएस को क्लोज करने देते हैं। ओके, ये लेने का मतलब नहीं है। अगर ये वापस थोड़ा सा भी रिट्रेसमेंट आया, जो नहीं आ रहा है अभी, इसका एसएल बनता 72 पॉइंट्स। इस हाई पे ब्रेक इवन करते हैं हम। कुड हैव बीन ग्रेट ट्रेड, बट ईएस को हम वेट करते हैं। ओके, कितनी स्क्रीन से? 3। 7 बजे अनएम्प्लॉयमेंट न्यूज़। 7 बजे, 8:30 बजे। ईएस इन्वर्ट कर गई तो हमें अच्छा खासा $500 के रिस्क पे ट्रेड मिल जाएगा, और पता भी चल जाएगा इज इट रियल और नॉट। अगर इधर कहीं वापस आता है एंड देन वी गेट लाइक बेरिश टू द बुलिश मोमेंटम, हम ले लेंगे। ब्रदर, आई वांट मेंटरशिप प्रोग्राम। अगर होगा मैं बता दूंगा फॉर श्योर गाइस, वेट फॉर इट। ओके, होगा तो मैं श्योर बता दूंगा आपको। Bro, you always get 1:1. Yeah, that's what I try to do. Not always. I get SLs sometimes as well, but again, I extend my TPs sometimes as well. But yes. WR win ratio पूछ रहे हो तो मुझे पता नहीं है वो। Yeah, if you are not trading, then you can do anything. But make sure you are giving enough time to forward testing, looking at markets. Okay, Saniva. It's not like you are doing everything in the like, social media, blah blah blah. Okay, I want you to focus on the session a lot, and once you are done, close out every chart, every broker out there that you are trading with, and I guess focus on the charts for a while, get that experience, and then you can do whatever. It's fine.
We do not need. If we close above this again, I'm willing to long this. ये लॉन्ग भी बनता था, स्नाइपर एंट्री होती. वाओ, what a fucking sniper entry that could have been. 16 पॉइंट का स्टॉप. Why, what's your win rate as of now? I do not know for sure what's my win rate. लाइव स्ट्रीम पे देख लो निकाल के क्या आ रहा है. Yes guys, yes, okay, we're gonna long yes if we can. Stop 11 points का something and we're gonna target the same thing. 3 2 1. Okay, आने दो. Limit orders. I did not get tapped in guys. मुझे फ्लिप करना था इसलिए मुझे परफेक्ट एंट्री चाहिए थी. I did not get tapped in and now it's running away. Unlucky, but hopefully you guys got in the market price. So hopefully I get tapped in as well. Otherwise ये भाग जाएगा. One is to one is average आ रहा है I guess. Either I should have taken trade on this pullback into this IFPG. Okay. Who got in? Did anybody got in? Why everything is pumping guys? I don't know why everything is pumping. Now you're not gonna get it every day. You're not gonna get retracement every day guys. I'm just flipping my Lucid accounts, that's why I needed perfect entry. Otherwise if you're trading normally you should have entered on the market price. That's what we do. And at this point you should be break even as well if you are into the trade, right? Because look at this, we tapped in this double highs. We do not want a retracement, we just want to push to the 1:1 if it can. But yeah, I missed out on this trade guys, but it's alright, we move on. Again, this could have been better entry as well, tapping into this, right? Retracement pay, I think SL should have been again what 33 points, but ये जो deep आता वो बहुत ही heavy होता. Let's see if I can get guys get a small scalp here to flip for $250. हाई निकल चुका है, बी वेरी केयरफुल. ओके, जस्ट चिल आउट. हाँ दैट्स वही चीज़ है, वही वो डर तो लगता है इधर एंटर होने से. इससे बढ़िया इवन मार्केट ट्रेड इन कर देते हम इधर एंड वी स्टॉप 70 पॉइंट्स मिल ही जाता है. आई डोंट नो व्हाई आई डाउटेड टुडे, बट इट्स ऑलराइट. योर नंबर ऑफ trades a day, trading time window. This is my trading time window. All right, can we get a pullback somewhere around here? मुझे तो बहुत कम पॉइंट चाहिए फ्लिप करने के लिए. All right, in baby in. The fact is, can we hold this now? Can we turn around this candle? Again guys, be very careful. Okay, we are inverting these FPGs. All right, we're gonna
If it inverts this bullish FVG, you know what setup is forming. Until then, I'm gonna see if I can flip these accounts. मुझे चाहिए 6 6.5 पॉइंट एंड आई एम डन. ओके गाइस, मुझे मेरा फ्लिप हो गया. ब्यूटीफुल. ओके, I do not give shit about RR or anything. We have flipped our accounts. रुक जाओ, दिखा रहा हूँ. Alright, we did flip the accounts, as you can see. Beautiful. Done and dusted, guys. That's all I needed to do today, nothing else. We did not inverted this FPG, so I was confident कि ये चले जाएगा, but yeah. पावर है फ्यूचर क्लिक, दोनों को पावर है. तो अगेन वो ऐसे, बट इफ यू डू नॉट हैव दैट, आई थिंक माई ग्लासेस आर ऑल्सो लाइक अगेन ब्लू की वो जो हार्मफुल चीजें होती है स्क्रीन से वो रोकती है. बट या, डब्ल्यू ट्रेड गाइस, डब्ल्यू ट्रेड. आर वी गोना गो टू नेक्स्ट हाइस? I got in the like retracement right here and flipped my accounts. That's all I wanted to do. And we have news in what, few times. अहमदाबाद, प्रतीक भाई. अरे यार, अगर मीटअप होगा मैं प्लान करके बता दूंगा गाइस, डोंट वरी, डू नॉट वरी. ऑफ क्यों होता है ये? ऑटो करना पड़ेगा मुझे. ऑलराइट, got that trade on ES, $660. Let's go Zil. W. I think we do go at this high, but be very careful guys, because again weak है, weak का 50% से रिजेक्शन दे सकता है, वही चीज़ है. मैं बता दूंगा प्रतीक भाई, मैं बता दूंगा. What time I FPG made on the ES at the 806? ये वाली, ये वाली, ये इन्वर्जन, ये बेरिश FPG का इन्वर्जन ये रहा, with the displacement of course. uh, 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 uh.
What about IFPG made on the ES at 806? Which one was 806? I do not have 806 guys. अगर हम did we close that? नहीं, हमने क्लोज ही नहीं किया था ना। देखो, ऊपर क्लोज ही नहीं किया था अच्छे से। There was no inversion. How to delete shapes and lines? उस पे सिलेक्ट करो and I guess backspace I guess डिलीट कर दो, इजी होता है। और डिलीट बटन। लेट्स गो ये स्टैटिक, कम ऑन यार। डब्ल्यू अगर एनक्यू पे भी ले लेते तुम आंख बंद करके वो काम कर जाता, बट एनक्यू साला ऐसा इतना बड़ा दे रहा था। 71 पॉइंट का तो डर तो लग ही रहा था एंड बट उसने अच्छे से टीपी दे दिया। एक बार बहुत बड़ी रिट्रेसमेंट दी, तो अगर रिट्रेसमेंट का वेट करते तो तुम्हें स्नाइपर एंट्री मिल जाती 48 पॉइंट के स्टॉप के साथ टूवर्ड्स दैट लॉन्ग, राइट। तो वही चीज़ें made 3K in that NQIFPG. Let's go W Srinivai is printing. Only Srini is printing, guys. Let's go Srinivai W. Uh, how much is your mentorship, bro? Uh, but upstep માં અકાઉન્ટનું રનિંગ છે, પે આઉટ મળશે ને ભાઈ, શું લાગે છે? મળી જશે easy પ્રતિક ભાઈ. Top step always pays you out. Red candle did not close above that, so again Harish, that was not inversion. Did you left negative or strat? कहाँ पे? घर पे? Vilas, you have been asking the same question. This is your 7th time asking the same question. I do not know what you want from me, guy. What do you see I am trading right now? I hope that is enough evidence on your answer, that whatever answer you want. Can you explain this trade? Liquidity sweep, inversion, IFPG, जो बोलो तुम, an entry. I waited for retracement. If you did not, it's alright. OMG, you are co. What is CO? Huh? Brother, there was a clear IFPG to downside at ES on 806. To the downside. Let me check. So you telling me that you're gonna take every inversion now? Okay, you guys are talking about this. Now I get it. You guys are talking about these positive FPG जिसका inversion हुआ है. You cannot take every IFPGs, guys. Otherwise, you're gonna end up losing so much money that you will never find yourself on the profitable side. Why the hell would you want to short these when we just are trying to invert this FPG after taking out liquidity? You see a surge momentum in the ES of what, 15 point, and then suddenly it inverted, and it is not even holding that, and it's not even look से ही खराब लग रहा है वो. Let me just say that, right? So liquidity sweep हुई है, हम ऊपर आ रहे, तो I was looking for longs at that point in the moment. So again, वो पहली IFPG to the short side, shorting is not gonna happen for me at least. While looking at NQ has pumped what, 100 points, right? Do I want to short ES on the other side even if NQ is coming back down to pull back? Look at that. There is a clean market structure sheet on the NQ. Right, you gotta look at so many things. I know it is hard right now for you to figure out what to look at, what to not look at, but yeah, hopefully you do soon enough.
So you think that I am looking at 2-3 things, that okay, inversion हो गया मैंने मार दिया, inversion हो गया मैंने मार दिया. So that's not how it works, right? I'm looking at so many things at one time. Again, even if I'm on the chatting with you guys, I do have experience of me trading live for 3 years. मैं यूट्यूब पे नहीं आता था तो मैं डिस्कॉर्ड में लाइव स्ट्रीम करता था. जो अभी इन्फ्लुएंसर बन के घूम रहे सारी इंडस्ट्री, वो सारे मेरे स्टूडेंट्स थे एट वन पॉइंट. तो वही चीज़ है. So I do have enough experience to look at everything at one point, and वही चीज़ है कि आई डू नॉट कंफ्यूज माई सेल्फ विथ सो मैनी थिंग्स. लिक्विडिटी निकाला है हमने, पंप किया है मार्केट, एन क्यू ने भी इन्वर्ट किया है, तो आई वॉज क्लियरली लुकिंग फॉर लॉन्ग्स. मैंने एन क्यू पे इसीलिए नहीं मारा कि वो बहुत ऊपर चला गया था. अगेन फट तो रही थी एन क्यू को मारने में. अगर मैं मार भी देता, अगर वो तो जाता ही टीपी, बट नहीं मारा मैंने. ईएस का वेट कर रहा था क्योंकि ईएस वॉजन दैट अवे, राइट. तो अगेन उसका क्लोज का वेट कर रहा था मैं. दैट्स ऑल. यस, मैंने अकाउंट्स को फ्लिप किया. यू कैन सी द पी एन एल ऑन द वेरी, आई डोंट नो तुम्हारी स्क्रीन पे कौन सी साइड होगी, बट टॉप कॉर्नर्स फ्लिप ही किया है मैंने, कुछ ज़्यादा किया नहीं. हाउ डू यू कंट्रोल योर इमोशंस? अगेन आई डू नॉट ट्राई. अगेन ट्राई टू कंट्रोल होता ही नहीं है, एक्सपीरियंस से तुम्हें सब आ जाता है. Go in Hulk, it's fine. Someday it's straight away gonna go up. So breaking even is a good idea there. अगर तुमने इस इन्वर्जन पे ट्रेड लिया होता तो तुम्हें आई थिंक 25-35 पॉइंट दिख गए थे. तो इट्स वे बेटर दैट यू ब्रेक इवन. वही चीज़ है. वेयर कैन, ओके, अगर तुम ये ट्रेड की बात करें तो तुम इधर लॉन्ग कर सकते थे. स्टॉप बिलो दिस आई एफ जी, एंड दिस कुड हैव बीन ट्रेड ऑन द एन क्यू. व्हाट्स माई एज? आई एम 25. सबके लिए बहुत लैग कर रहा है क्या गाइस? Explain the trade on the charts. Okay, so we did swap the liquidity guys on the NQ. Okay, there was a SMT with the ES, but NQ did swap the liquidity. We did again, we inverted IF, we made IFPG on the NQ, right? So I was waiting for ES to do the same thing following NQ. ES did inverted that bearish FPG right here. अगर आपको ICT कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आपको वो सीखना पड़ेगा पहले. ओके, उसके बाद की चीज़ें है. ओके, तो इन्वर्टेड दैट एफ, बट मुझे एंट्री नहीं मिली थी तो मैंने ये ऑर्डर लगा के रखा था. स्टॉप बिलो आई एफ पी जी एंड टारगेटिंग 1:1. मुझे बहुत कम चाहिए था वैसे भी. मुझे तो 12 पॉइंट भी नहीं चाहिए थे, 6 पॉइंट भी चाहिए थे, 6-7 पॉइंट. तो मैंने वो लेकर बंद कर दिया क्योंकि आई एम locking in another payout if I flip successfully for 3-4 days more. आई थिंक मैं नेक्स्ट वेडनेसडे एक और पे आउट डाल सकता हूँ अगर मैंने सक्सेसफुली फ्लिप किया तो. देयर इज बी गिव. ओके ओके, एसएल सिखाने वाला था. गुड क्वेश्चन. ओके, अब तुम मेरी स्ट्रीम में जाओ, सारी स्ट्रीम में, वहाँ पे जाके देखो, तुम एक पैटर्न देखोगे मेरे एसएल्स में कि मैं कहाँ एसएल लगाता हूँ सारे. ओके, वी इन्वर्टेड दिस एफईजी. अगर मैं एनक्यू को ये ट्रेड लेता तो मेरा एसएल इधर टाइट होता. क्यों? क्योंकि अगेन इफ वी हैड पंप लेट्स से 70 पॉइंट, देयर इज नो reason for me to give SL to this bottom of this candle because we are way too bullish to come back down. आज आ गया, that was a surprise, but हमें वो IFPG को ही कवर करना है इधर. ओके, we just need to cover this IFPG when market is very bullish to the upside, right? It is aggressive to the one side while ES is following. There is no need for you to put this SL. अगर आप करते हो तो इट्स ऑल राइट, बट आई सजेस्ट दैट अगेन सम डे यू विल गेट टेकन आउट, स्वीप करके वो वापस ऊपर चला जाएगा, बट इट्स फाइन. ओवरऑल यू विल बी प्रॉफिटेबल बाय डूइंग दिस. ओके,
again, that saying that you know everything that I know, but again, that cannot be possible. So again, it's very tough. Hopefully you get it by experience, right? So in the trades like this, I prefer to keep SL here. Let's say मार्केट ने इधर कहीं इन्वर्ट किया होता, ओके, और रिप्ले सिस्टम में जाएंगे हम. व्हाट? हम रिप्ले सिस्टम में जाएंगे. यार, ओके. तो अगर लेट्स से मार्केट इधर क्लोज करता, ये कैंडल को इधर इधर कहीं, ये ग्रीन कैंडल को इधर कहीं क्लोज करता वो, so let's just say this was the green candle, then it makes sense for me to put a SL below this candle. इधर कहीं वीक होगी, तो अगर वीक को कवर करना चाहते हो तो कर सकते हो, वन नाइट्स और राइट. then it makes sense for me to put SL below this, just because again we have not closed IFEG के ऊपर बहुत ऊपर, राइट. वी आर स्टिल, so we should be covering this whole area which is like BPR जो भी बोलते हैं वो लोग, right, and that's why we are doing it. But what happened was, next candle, we closed so far, so for me to put that big of SL, it doesn't make sense for me. Then we are gonna be turning bullish to bearish now. Okay, so I do not want market to come back down. If it wants to pump, continue going higher, it should respect this IFPG, not even coming into lower quadrant of that IFPG, like lower 50%, right? And so that's there is so much goes, I mean, there is so much deep knowledge that you guys need to look, I mean, need to have, I guess, to look at what the things I look at, the way I look at the market, but it comes with experience only. So right, that is how I place SL in this particular trade. Okay, let's say if now I'm gonna take another trade. If I do take another trade, I'm gonna, अब जो जो भी ट्रेड लेंगे उसमें एसएल समझा दूंगा जिससे तुम्हें समझ में आ जाएगा. दो तीन टाइप के होते हैं एसएल, अदरवाइज इट्स ऑल गुड. न्यूज इन 10 सेकंड गाइस, बी वेरी केयरफुल, बी वेरी 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 केयरफुल. दिस रेड फोल्डर न्यूज, रेड फोल्डर न्यूज. तो ये या यू कैन पेपर ट्रेड. If you are new, you should not trade less than 1 minute. I mean, lower than 1 minute. दोनों में से एक भी चीज सीखने लायक नहीं है सेंस है. Made money on 1 minute IFPG. Let's go, guys. W. आपको ना फुल पोर्ट सीखने की जरूरत है, ना फ्लिपिंग सीखने की जरूरत है. नो प्रॉब्लम क्या. तो लेट्स से इफ आई हैड एंटर्ड ऑन दिस, ओके, ये एफपीजी जो हमने मार्क करके रखी थी एनक्यू पे, राइट, just because we were done and I was explaining you to guys, otherwise this was a trade. If somebody took this trade, एक इश्यू था इस ट्रेड में कि हम न्यूज़ से 5 मिनट पहले ही थोड़ा ले रहे थे ट्रेड, बट तुम ब्रेक इवन भी डाल सकते हो और निकल भी सकते हो 1 मिनट पहले न्यूज़ से, सो दैट इज़ फाइन. तो लेट्स से हम इस एफपीजी को क्यों गिन रहे हैं, ना कि इस एफपीजी को, क्योंकि दिस गॉट रिस्पेक्टेड व्हाइल गोइंग अप, टेकिंग आउट दैट लिक्विडिटी टू द अपसाइड, राइट. Okay, so now we want the disrespect of this FPG, the one it got respected. Short on this. Now where I want my SL is, कोई सी भी अच्छी वीक ले लो, कि तुम स्विंग हाई ले लो, जो भी ले लो, right? You can put anything, right? Again, this is the swing high here, but I do not want to put again. When market is doing inversion like this, very aggressively, अगर वो invert करता है market, something like this,
then you do not want yourself to be putting a very heavy SLs, because again, if its market is aggressive to the downside, you do not want market to flip around, right? You just can put SL here, just closing just above IFPG, or maybe the week, cover the week mostly. That's all you need, right? And you can target into any kind of 1:1, even the lows, that is on to you, right? So you will see this kind of trades forming every single time. The only problem with this trade was that we were too close to news. Let's go yesterday. Let's go fix it. S, let's go W. R- Roshan. So many people are taking inversions right now. Beautiful, guys. Beautiful. And taking inversion is alright, but make sure you are not taking every inversion in the market. Otherwise, you will get faked out so many times that you will stop trading this strategy. It is very easy to get faked out in this strategy. Make sure you are doing it right. Make sure you are choosing right IFPGs. We got 135 people watching and 30 likes. How is that possible, guys? Make sure you like the stream. No, I can flip next day. Mano, if I lose on the first trade in the flipping, so like मैं already negative ही कुछ कर रहा होता हूँ, क्योंकि flipping में TP तो मुझे पूरा चाहिए नहीं. So if I lose first trade, I'm gonna be down more than I was targeting. So it's way better that I come back tomorrow and flip. Flipping means just adding days, right? I don't know Gantar. I search it online. I never back test. I mean paper trading मैंने की है, वो भी इस पे की है, trading view पे. नेक्स्ट ट्रेड बनेगा तो देखेंगे. आप क्या करते हो when IFPG happens on trade? It is rarely a case. 811. Guys, when you talk to me, just please make sure you are talking about New York timings. Again, ये में टफ हो जाता है. 11 means 41 की बात कर रहे होगे, ये वाली 41 और 31. 41. ना दिस इज, तो ये इन्वर्ट हुई थी, आप ये बोल रहे हो ट्रेडिंग व्यू में. चेक कर लेता हूँ. No, it's still the same. It did not get inverted. The one I did mark. No, it did not get inverted in trade weight. Normal. There is no way you identify fake IFPGs. Just do not take every IFPGs, right? I'm trying to again. How do I identify fake IFPGs? It's no brainer, right? I again. तुम इधर अगर ये इन्वर्जन कर देगा तो तुम लॉन्ग मार दोगे, तो वो फिर अगेन तो फिर तुम लॉस करोगे ही करोगे, right? You do not need to again. फिर कोई से भी पॉजिटिव बना देगा, उसको इन्वर्ट कर देगा, वो मार दो के, ऐसा नहीं करते वही चीज़ है. You should check the inversion in the broker. Yeah, you should trust Tradeovate better than trading view. बट मैं वो रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं ट्रेडिंग व्यू पे कर रहा हूँ.
I'm okay with getting faked out 1 or 2 times in a, I don't know, 3 4 months if there is issue with trading with derivative. It's negligible. Oh, you took any trades? Yes, I took a long on ES on my charts. There is no way to figure out, Dhruil. That's the thing. There is no way to just do not make stupid things. If you can do that much, I think it should be alright. Stupid meaning कि तुम अभी भी कोई इन्वर्जन, चलो ये शॉर्ट है, मार्केट पूरा डंप कर रहा है अभी, तो कोई सी भी बेरिश एफिज इन्वर्ट कर देगा, तुम घुस जाओगे. दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स, राइट? लुक एट दिस. This inversion looks promising, then it's gonna invert something here and then you take trades. No, राइट? सो इट्स मोस्ट प्रोबेबली 9:30 to 11:30 में तुम्हें जो ट्रेड मिल रही है, आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली दे विल नॉट बी फेक. बट अगेन इफ यू आर डूइंग इट स्टूपिड स्टफ, देन again and again and again you're gonna get faked out so many times. Inversion should come with high time frame support and liquidity sweep. I do not agree to high time frame, but again liquidity sweep is a very good indication, I guess. But sometime in the continuation you will not get that. ये भाई सोता रहता हूँ मैं. Not gonna respond to that sensei. I mean, I'm currently running on a low sleep. I was running on a low sleep. I guess आज अच्छे से सो लिया मैंने. पर वही करता हूँ, कंटेंट क्रिएशन के बारे में सोचता हूँ, स्ट्रीमिंग कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ सोचता हूँ, दूसरे कुछ इधर उधर के काम देख लेता हूँ. आई गेस मैं मोस्टली 10 11 घंटे तो चार्ज ही देखता हूँ दिन के, तो वो देख लो एंड देन प्ले सम गेम्स हियर एंड देन. भाई टुमारो नाश्ता क्या? फॉर श्योर श्रेणी. I has to be in the. Okay, I'll get it tomorrow. If you are new, just go to his ICT channel, ICT Inner Circle Trading. Learn from there. How do you look? How do you know which liquidity sweep will be good? Again, the way I teach it, you do not need any high time frame confirmation. Is all your students? Yes. Which videos? Everything. Every single thing. Start from 2016 mentorship. There is a playlist 2016, 17, 2022, and then once you are done with that you can watch everything else. सर जी कोई और ट्रेड मिलेगी क्या? रुको. हेलो जरूम भाई, कोई ट्रेड सेटअप बनवा दे यार. चैट में पूछ रहे हैं लोग.
ओके, करवाता हूँ बोला है। इज आर्यन इज योर स्टूडेंट? यस। डिड Vedic trade learn from you? Yes. Yes, Sanjay bhai. Yes, okay, that's a good thing to, I guess, look at it. One way to look at it, I guess. ट्रेड जाने के बाद री एंट्री के लिए दो शब्द अभिषेक भाई। जी जी, वेल प्लेड। एंटी, should we trade NQ in the London session? You can if you want. But if you are asking for honest suggestions, no, don't do it. You will get faked out. You will see lots of people are making money, and you will see me trading London, but me coming from 3 years of experience, I can trade when market is closed as well. So again, that's a different story. Did you watch full ICT core content? Yes, I have watched every single video out there. भैया ये मार्केट क्लोज में मैं कर लेता हूँ भाई, जय भाई। मैं सैटरडे संडे भी एनक्यू ट्रेड कर लेता हूँ, आपको पता नहीं है तो। वो गैप जो बनती है ना, वो मेरी वजह से बनती है। तो मैंने बाय किया होगा तो ऐसी गैप बनेगी, सेल किया होगा तो दूसरी और गैप बनेगी। बेस्ट ट्रेड टू पास 50 के लूसिड अकाउंट्स। स्ट्रेटेजी मैं कैसे बता सकता हूँ बेस्ट? एवरी स्ट्रेटेजी इज बेस्ट आउट देयर। 5 days, 5 days what? अभिषेक भाई लॉक्ड $4,000 टुडे। अरे यार प्रथम भाई, डब्ल्यू यार, क्रेजी। तो प्रथम भाई एक वॉच आती है, अगर आपको पता नहीं है तो, अगर आप अपने टीचर को और आई डोंट नो मेंटोर को अगर वो गिफ्ट करते हो तो $40,000 का पे आउट आता है नेक्स्ट। तो वॉच का नाम है, तुम्हें पता ही है, क्या ही बताऊँ। So like you said, not to take every inversion, how you figure out which one to trade, which one not to. Oh, experience. कार्टियर, यंग वीज भाई, है ना, बहुत पे आउट निकाल लिए। ईपी नहीं तो उतना ऊपर नहीं जाना भाई, उतना ऊपर नहीं जाना। नहीं नहीं, रोलेक्स भी नहीं। 4,000 का निकाला है बच्चे ने, 40,000 का नहीं निकाला, मार मत दो उसको। बच्चा है, वीकेंड में मस्ती करता है बहुत। बता दूं क्या स्ट्रीम पे प्रथम? Utsav Patel, your daily bias is not gonna help you a lot while you are trading lower time frames. You can get faked out so many times. So you will have to figure out the way to, I guess, find where market is gonna go in next 1 hour, 2 hours, or at least predict that or react to what is happening in the lower time frame. Uh, if you are very good at the higher time frame, you will be good at the lower time frame as well. It's just that you need the little bit practice. नहीं नहीं बोल रहे। Like, do you make bias using dual and averages? No, I just mark highs and lows.
स्ट्रीम स्ट्रीम पे आके बैठा मैं, तभी मैंने मार्केट एनालाइज करना शुरू किया। अब तुम देख लो मैंने कहाँ पे हाई टाइम फ्रेम खोली है, कहाँ पे कुछ किया है। जो भी करता हूँ वही है मेरे में। आता हूँ हाई से लो मार्क करता हूँ, इधर लो निकाला, इन्वर्जन किया, लॉन्ग मारा मैंने ऊपर की साइड, और ऊपर से शॉर्ट मारा नीचे से की साइड। दैट्स ऑल आई डू। आपको कितना टाइम लगा प्रॉफिटेबल होने के लिए? 1 साल आई गेस, एन क्यू के साथ, परफॉर्मेंस के साथ। कैपिटल तो बहुत लग चुका था भाई। कैपिटल तो हम भाई, उधर जाओ ही मत। ओके उत्सव भाई, होपफुली यू मेक इट work it out in the lower time frame. Okay guys, crucial points. Okay, do we invert this positive FVG or do we invert this bearish structure? Potential trade. भाई प्रथम भाई, अभी से शुरू कर दिया क्या तुमने? हिरेन भाई, चैट में आके उसको कुछ समझाओ, अभी से नहीं होता, अभी तो थर्सडे है। थर्सडे भी नहीं, ये कौन सा दिन है? हाँ थर्सडे होगा। हाँ सर, अभी कॉल मत कर लो। अरे भाई नहीं, सही में दोनों ही बोल रहा हूँ दिल से। इट्स ऑलराइट, आई नो दैट यंग, डोंट वरी। Yeah, accept that is it is volatile. जो इमेज बिगाड़ी है तूने प्रथम लाला। चल वी एंटर इनटू दिस। एंटर इनटू व्हाट? मैंने कुछ बोला ही नहीं। मैं तो कभी भी बोलता नहीं है एंटर करने के लिए। और कभी एंटर भी मत होना मेरी ट्रेड्स पे, लॉस हो जाएगा, मुझे आता ही नहीं है। वो तो तेरे बाप को बताना पड़ेगा मुझे, रुक जा तू, कभी मिलता हो तो। ब्रो हाउ टू मेक कम बैक इन ट्रेडिंग? हम तो कभी गए ही नहीं थे। संकी भाई, संकी जैन, हम तो छोड़ा ही नहीं था ट्रेडिंग को। मार पड़ी थी बहुत मार्केट से, पर हमने कभी छोड़ा ही नहीं था। तो वही चीज़ है। देयर इज ओनली वन वे टू फाइंड आउट। अभिषेक भाई, 36K ऑलरेडी फॉर द ईयर, क्रेजी। वी गो फॉर 500K इफ माई प्लान वर्क्स आउट गाइस, इफ ट्रेडिफाई का कर्ज हट जाए मेरे से। मैं बता रहा हूँ, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। ट्रेडिफाई एंड आई एम टीपीटी कर्ज, बहुत कर्ज है साले मेरे पे, वो हट जाए। लूसिड का हट चुका है, लूसिड का बहुत बड़ा कर्ज था मेरे, आई मीन कि कभी पे आउट ही नहीं बना पाता था लूसिड पे। दो, आई थिंक 1 डेढ़ महीना मैंने ट्राई किया लूसिड पे, डायरेक्ट वो S2Fs आते थे उसमें, बट फिर मैंने फिगर आउट कर लिया वे टू डू इट, एंड नाउ आई एम, सॉरी गाइस, so I'm now at 40K with them, $40,000 with Lucid.
right? Out of this $36,500, I'm withdrawn 31,000 from Lucid. So that's the power of Lucid. If you want the link to that, एक्सक्लेमेशन मार्क लूसिड एंड डिस्क्रिप्शन में भी लूसिड की लिंक है अगर तुम उनके साथ ट्रेड करना चाहो। मैं तो भाई देखो उनको ही प्रमोट करता हूँ जो मुझे पे आउट देते हैं और सबको पे आउट देते हैं। एज सुन एज आई फाइंड एनी इश्यूज ओके गाइस, पोटेंशियल ट्रेड फॉर्मिंग। Oh no, it's not now. लेट्स गो यंग विज भाई, प्रथम भाई, वही ट्रेड करना चाहिए। देखो गाइस, मैंने नेगेटिव आरा छोड़ दी, मेरे स्टूडेंट अभी भी कर रहे हैं जो जिसने सीख ली, वही चीज़ है। मैं चेंज कर रहा हूँ, तुम्हें करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, ऐसा कुछ नहीं कि ट्रेड मैं करूँ वो करना चाहिए, तुम सीखो। मैंने बहुत सारी स्ट्रेटेजीज बनाई है, बहुत सारे लोग बहुत सी चीज़ें करते हैं। स्ट्रेटेजी आईसीटी कॉन्सेप्ट के अराउंड ही होती है, बट आरआर क्या चूज़ करना है, कौन सी ट्रेड लेनी है कौन सी नहीं, वो चूज़ करने में लोगों को बहुत इश्यू होता है, तो वो मैं क्लियर आउट करता हूँ मोस्ट प्रॉब्ली। और राइट गाइस, पॉसिबल ट्रेड इन 9 seconds, if we close below you can take this trade possibly. Okay, it's a closed. I don't think so you should give more than 40 points if you are entering this trade. I am not in this trade. Okay, again I'm telling you, abhi se not in this trade because मेरे पास कुछ है ही नहीं ट्रेड करने लायक अभी। आई एम जस्ट चिलिंग। नहीं एंटर नहीं कर सकते तुम भाई, ये एसएल है, दिस इज एसएल, डू नॉट एंटर प्लीज, दिस ट्रेड इज एसएल। प्रॉबेबली थोड़ा सा ज़्यादा दे सकते हो तुम एसएल, बट अगेन आई डू, अगेन अगर वो नीचे जाने वाला है तो वो ऊपर नहीं आएगा वापस से, राइट? वी आर वेरी, this becomes a B setup just because we are already have dumped so much, right? So this is what can happen. Let's see if it respects. If we can make a bearish, no, again it's gonna fuck around. Yeah, did not work out, guys. Anti. Yeah, we did inverted that. Fuck that. Continuation trade failed, guys. Continuation trade did fail. अब ये इतना पम्प करके वापस आना चाहिए. It's like crazy moving right now. Don't tell me it's gonna invert and go down now. No fucking way, guys. No fucking way it's possible. बारकोड यही नहीं, ये देखो. What the fuck was this? 78 point candle out of nowhere. Other than respecting this, अगर ये क्लोज होती है, I would still say it's a very possible trade, guys. It's very possible. You can enter if you want. Why is it giving me still the same?
Okay, this is inversion guys, this is also inversion. Stop 43 पॉइंट का लगा सकते हो. Again we are just trying to continuation, taking the same setup. It can fake out as well, right? Again you need to understand that we are very much has done whatever we wanted to the downside, so this can be faked out as well. So you need to be very understanding what you are taking trades on. But this is also a setup, just letting you know, this is also a setup. नो डू नॉट एंटर स्ले भाई, मैंने 50 बार बोला. आप थोड़े दिमाग से गए हुए हो क्या? क्या हो रहा है गाइस, क्या हो रहा है? ये कंटिन्यूएशन बार बार फेल हो रहा है क्या? रुको गाइस, मैं थोड़ी रील स्क्रॉल कर लूं. मेरा खत्म हो चुका है भाई, मैं एक ही ट्रेड विन लेता हूँ, दूसरी छूता भी नहीं हूँ. ये तो सेटअप्स दिखा रहा हूँ जो मैं लेता हूँ. ईएस की भी हाँ प्रॉब्ली काम कर सकती थी. दिस वॉज ए प्लस. The one we took yesterday, first trade was a plus. This is not a plus just because we have dumped so much. 400 points. So continuation always gonna be harder trade to find. Right? Again, after dumping 400 points, market can chop around. That's the reason behind it. Oh. Ooh. Ooh, ooh, ooh. Wow. भाई 25 के रिस्क मैनेजमेंट बता दो. 300 डॉलर रिस्क इन द फंडेड, सॉरी फंडेड एंड इवाल्स बोथ है गैस, वही ऐसे ही काम करेगा. और इवाल्स में थोड़ा ज़्यादा रिस्क कर सकते हो, बट या hard part is to create buffer. Yes, Kohil, my hardest part is to create buffer. Hardest part is to create buffer. NGL, not gonna lie. स्ट्रीम पे होता हूँ तभी काम आ जाता है, झूठ ना बोलूँ ना मैं.
ये इन्वर्ट करता रहेगा, तुम शॉर्ट ट्राई करते रहो, कभी ना कभी तो काम करेगा ना। ऐसी मेंटालिटी रखने से अकाउंट उड़ जाते हैं। और सोचो तुम कभी निकलते ही नहीं पहले ट्रेड से ही। ये निकलने ही वाला है, लो बस ये फेक आउट बार बार कर रहा है जस्ट बिकॉज वी आर चॉपिंग। लाइफ का पहला ट्रेड मैंने 2019 में, तो आई गेस 7-8 साल हो गए। ईएस अच्छे से मिल गया, आई थिंक आज ईएस ही था जो अच्छे से बिहेव किया है गाइस। अगर ईएस की इन्वर्जन पे शॉट मारते स्टॉप तो साला फिर भी बड़ा ही होता, 12 पॉइंट का। भाई ये लोग निकल क्यों नहीं रहा, कब का निकल जा भाई। ब्रो आपका 2025 में नेट इनकम क्या थी फ्रॉम ट्रेडिंग, प्लीज आंसर। आई थिंक आई हैव मेंशनड इट। So payout was somewhere around $215,000 in 2025. Expense was 65 to 72,000। इन बीच में से थोड़े मेरे ट्रांजेक्शन लॉस्ट हो चुके हैं, बट तुम 72 लिख लो ऊपर, ऑन द हायर साइड 72,000। So do the math on that। Yes is, क्योंकि yes is again it's not gonna move wild like NQ, right? That's why। आ गए डिस्कॉर्ड में, मिलता हूँ मैं। और guys it is getting very boring right now। ओके, ये एनके पे तो आज कुछ काम नहीं किया, बट ईएस में जो ट्रेड लेनी थी हमने ले ली, काम कर ली। दैट वाज द ओनली ट्रेड आई टुक टुडे, ये वाली, एंड आई एंडेड अप ग्रीन। इट्स स्टिल कंटिन्यूइंग टू द डाउन साइड, मार्केट पूरी घुस चुकी है अगर तुम देखो तो ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। So to turn this into bullish, it's gonna be very hard for now, right? Look at what BTC is doing. BTC is like 67. Sol is at 84. I'm planning to stack some Solana, for the bull run. We are preparing. This is winter, crypto winter is coming. So I'm gonna keep stacking Sol from 70, 75. But I'm minus 800. What to do? Come back tomorrow. Today is not your day. Nothing to do is the best thing to do. So everything is down, everything is red. I can see everything is red. Bitcoin is down 8%, silver is down 13%, gold is down 2%, NQ is down close to 2%। तो 2026 में तो दुनिया खत्म है भाई, है ना? तो तुम टेंशन मत लो, अपने अकाउंट्स डाउन है तो, है ना, आ जाएंगे वापस। और guys, I'll see you tomorrow। Thank you for joining। I think this was shorter stream, 15-20 मिनट की, बट कुछ हो नहीं रहा, हमारा काम हो चुका है फ्लिप का। इधर बैठ के ज्ञान ज़्यादा पेलेंगे नहीं हम, क्योंकि हमें कुछ आता नहीं है, कल ही ट्रेडिंग शुरू की है मैंने, तो वही चीज़ है, ज़्यादा ज्ञान पेलने का कोई मतलब ही नहीं है ना। मैं जाके एआई टूल्स बनाता हूँ जो रिस्क मैनेजमेंट समझाए आपको, है ना। और है guys,
All right. I'm gonna see you tomorrow. Thank you for watching. Love you all. We're gonna keep doing this shit every day live. We need lose it. Oh भाई ये लो क्यों नहीं निकल रहा? हेलो फ्रेंडली फायर था भाई, किसी ने नहीं समझा तो. Alright guys, I'll see you. Thank you, bye. Peace. If I'm gonna make something, I'm gonna make a website where you will find everything in one place. And of course I'm gonna share some part of my affiliation as well. So let's say if you use my code in future, there is a chance that you will get extra discount from my code, right? You're gonna get point system where there's so much things to do out there, right? I don't want to say it on until I make it, but yeah, we're gonna have to work hard on streaming right now, growing our audience, and then I can invest into something like that, because it takes so much it's gonna take so much investment to just create that system, right? I will have to grow my affiliation, just because then I can go to firms and say that this is my plan, cooperate. So then after they're gonna give you guys what I need you to provide you to guys, I mean to you guys, right? Again, there are lots of stuff going in backend, not only just live streaming. I'm recording so many videos right now, so when I start to launch, it comes out consistently for you. Like every 2 days there's gonna be one video on how I made it where I am today. So that's gonna be a hell lot of stuff which is real, right? I'm gonna tell you what things I used, not something that I made. Okay, there's a huge difference between those stuff. There will be lots of people exposed as usual, but again, I cannot do anything when I'm in the process of saying something which is true. It's gonna be true, right? Oh, again, everything is in the pipeline. We're gonna make it, and this channel is gonna be the biggest future trading channel in India. Believe it or not, there is not lots of people who can come live and trade every day. Let me tell you that, because they need to full port and make some shitload of money while blowing 50 accounts and make money in one, right? And then show online. But yeah, look at this. No, okay. I do it consistently live when I purchase accounts. I show you guys not all of it, but I do accept that I have blown accounts, blah blah blah, here and there. Right, you have been seeing this Lucid account since I passed those, right? I have taken out more than $25,000-$30,000 on this from this 150 case. I showed you guys I bought these accounts. When I bought these accounts, passed this, started trading. So that is what called journaling online, not just coming on live and slapping the certificates. तो वही चीज़ है. So there are so many things gonna come up, and you're gonna be very happy that you are very early onto this channel. And yes, if you are buying accounts, make sure to use code GAME with Tradeify and Lucid. I'll see you guys tomorrow. Thank you for watching. Peace. Bye bye. Take care.